So, well, so we have discussed about that superposition of two perpendicular simple harmonic motion, and that is basically called Lissaj's figure. So, if you have a two perpendicular SHM, one is along x direction and that is along y direction, and if you place a particle in two perpendicular SHM, so what kind of trajectory that particle will be follow? That is that depends upon various parameter, phase difference, as well as frequency ratios and amplitude ratios and so on. So there are many kind सर of हाँ जी सर जो जैसे लीनियर मोशन था, ट्रेजेक्टरी था, हाँ जी हाँ तो जी तो उसमें मतलब दो स्प्रिंग कैसे मूव करेंगे? मतलब वो ये जो लाइन है वो किस चीज की है? वो सेंटर ऑफ मास की है दोनों की, या क्या है? नहीं, वो तो आपका लाइन जो है दैट इज एक्चुअली फॉलोड बाय पार्टिकल. सपोज मान लीजिए एक आपका एक्स डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है एंड दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन में, है ना. अगर इन दोनों आई मीन दो परपेंडिकुलर एसएचएम है, वहां पे एक पार्टिकल को प्लेस कर दोगे तो पार्टिकल किस तरह की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा? दैट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. और वहां पे कहाँ पे प्लेस करेंगे? या तो एक स्प्रिंग पे प्लेस करेंगे या तो दूसरे, मतलब उनके बीच में कहाँ प्लेस कर सकते? टू नहीं, आप प्लेस कीजिए ना, जैसे आपका ओरिजिन के अबाउट प्लेस कीजिए उसको. ओके सर, ओके. So you have seen that you have a superposition of two perpendicular SHMs, and that is called Lissaj's figure. So one is along x direction having amplitude A and frequency omega t with initial phase phi, and that is along y direction having amplitude B and frequency is omega with initial phase 0. So you have a two perpendicular SHM. If you place a particle into perpendicular SHM, so it will follow this kind of trajectory. So x square, x by a ka whole square, then 2xy by ab cosine of phi, right? Cosine of phi, then Sir, brightness is not fixed. Sometimes it will be changed. brightness. ये सर बहुत लाइट दिख रहा है. Let me. Tell me when it will be fine. आप बताइए, ठीक दिख रहा है? अभी सही दिख रहा है. Tell me when it will be fine. Now is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Someone is saying that board is not properly seen. Is it? आपको दिख रहा है या नहीं, बताइए अभी. पुनीत बताइए, दिख रहा है आपको? हाँ सर, लेकिन मेरा लैपटॉप है सर, तो मुझे तो हमेशा क्लियर दिख रहा है सर. हाँ, अच्छा. बाकी सबको दिख रहा है लेकिन लाइट है. हाँ जी, आपका आवाज क्लियर नहीं है. बताइए, आपको दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन मुझे तो स्क्रीन थोड़ी लाइट दिखाई दे रही है. थोड़ी लाइट, अभी भी लाइट दिख रहा है. लाइट ब्राइटनेस कम कर दे, अभी ठीक दिख रहा है. नॉट क्लियर. यस सर. Yes. Contrast is not good. 1 minute. Now चेंज कुछ ये नहीं हो रहा है. 1 minute. अभी हाँ सर, अभी आई थिंक ओके है. बेटर. अगर दिख रहा है तो फिर हम प्रोसीड करें. कल पूरा ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा सारी चीजें. सो आई थिंक विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फ्रॉम टुमारो. सो shall I proceed? Tell me.
Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए, so you have this kind of trajectory that particle will follow this kind of equation, right? So you have a x square by a square, then 2xy by ab cosine phi, y square by b square. On the right hand side you have a sine square phi. Then you have seen that that trajectory will be followed. That depends upon various trajectory that particle can follow. That depends upon what? That depends upon phase difference as well as amplitude a and b. It will also be depends upon that frequency ratio, है ना? ये सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना? जैसे सपोज मान लीजिए आपका केस में एक एग्जांपल बताता हूँ, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड आल्सो. सपोज मान लीजिए आपका जो फेज डिफरेंस है दो एसएचएम्स के बीच में, सपोज मान लीजिए फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 है. अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है तो फिर क्या आ जाएगा बताइए, किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगा पार्टिकल का? If you have a phase difference between two SHMs is pi by 2, then what kind of trajectory will be followed? It will be kind of ellipse, right? Ellipse. And that can be visible from here also. जैसे आपको कुछ याद नहीं है एग्जाम में, तो फिर क्या करेंगे आप? सिंपली जो बेसिक जो फंडामेंटल रूल है उसको फॉलो कीजिए. डिफरेंट टाइम ले लीजिए और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आप प्लॉट करते जाइए, पॉइंट को नोट करते जाइए, ठीक है? एग्जाम में 2-3 पॉइंट अगर आप नोट कर लेंगे तो फिर आपका आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना? और ये ट्रेजेक्टरी यहाँ से भी आ जाएंगे, सपोज मान लीजिए, बट सारे ट्रेजेक्टरी आना मुश्किल है. जैसे इफ यू टेक फॉर example 5 equals to pi by 4, 5 pi by 4, 3 pi by 4, then it will be very difficult to guess that trajectory from this equation. That's why I have given you that general rule. But in some sense, in some case, you will easily get when phi equals to 0, you will get the trajectory that will be kind of straight line, but it will be in the plane. It will be in the xy plane along origin. It will be along xy plane. If you take, for example, another example, if you take phi equals to pi by 2, then what will happen? Then trajectory you can guess from here also. अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे पाई बाई 2 पुट कर देंगे आप, क्या आ जाएगा बताइए? So you'll get kind of this will be gone. Okay, so you'll get x square by a square plus y square by b square, that will be equal to 1, right? Sin square pi by 2, that will be 1. So this is the equation of what? किस तरह की है ये? This will be kind of ellipse. कब? जब आपका a not equals to b है. The trajectory will be circle. It will be circle when a equals to b. That's why I said the trajectory that particle will be followed, that depends upon amplitude also. It will be ellipse when a not equals to b. It will be circle when equals to b. And now today we are going to see another important or interesting thing, that how that trajectory can be depends upon frequency ratio as well. So now we'll modify that frequency of SHMs. Please look into it. It will be beautiful. So now we'll take that frequency ratio along x-axis. That frequency of oscillator is 2 omega. Along y-axis is omega. And I'm taking that phase is like what? This is along. This is phi, and this is initial phase is 0. By the way, that if you take any arbitrary phase like phi 1 and phi 2, then trajectory will be followed. किस तरह की trajectory आएंगे? That will be depends upon delta phi 1 minus phi 2. ठीक है. So अब क्या है आपका जो frequency ratio? If I ask you that what is the frequency ratio, you can see that frequency of X oscillator or X SHMs, that will be 2 times the frequency of Y SHMs. देखिए जरा, इसका frequency कितना है? 2 omega है, and frequency of Y SHM, that is omega. So basically I can say that omega X, that is 2 times omega Y. It means that frequency ratio omega X is to omega Y, that will be how much? That will be 2:1. So now what kind of trajectory that particle will be followed? If you place this particle in 2 perpendicular oscillator, their frequency is no longer same here. And I have taken initial phase of X oscillator, that is phi, and for Y oscillator that is 0. सर हाँ जी बताइए. ओमेगा एक्स इज टू ओमेगा वाई 1:2 होना चाहिए ना, ओमेगा एक्स तो 1 है. हाँ, यहाँ पे आपने आप बताइए ओमेगा एक्स की वैल्यू कितना है, बता दीजिए आप. ओमेगा एक्स कितना है जी? दैट विल बी, आप बताइए. 2 ओमेगा है. ओमेगा वाई कितना है जी? दैट इज योर ओमेगा है. तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 2:1. हाँ,
Well, so now we'll proceed from here. From here, you can clearly write that y by b, that will be nothing but sine of omega t. Now I'll expand this equation. So you'll have x of t, that will be equal to how much? And in fact, I'll bring that a on the left hand side. So this will become x by a, that will be nothing but sine of twice omega t plus phi. And I'll use that sine a plus b formula. If you do this, you'll have sine of twice omega t cosine of phi, and additional term, that will be what? That will be cosine of twice omega t sine of phi. Cosine of twice omega t, then you have a sine of phi. Now I'll write sine omega, sine twice omega t. That I can write 2 times sine of omega t cosine of omega t and cosine phi. Now if I write cosine 2 omega t in terms of sine omega t, how much you will get? कितना आ जाएगा जी? क्या मैं लिख सकता हूँ